This evening, we will be reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter number 4, text number 9. तो हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9. This is a very famous verse, so if you know this verse, please chant. Janma karma cha me divyam. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tattvataha. Evam yo veti tattvataha. Tyaktva deham punarjanma. Tyaktva deham punarjanma. Naiti mameti saurjuna. Naiti mameti saurjuna. हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है. तात्पर्य: छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है. जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है. भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं. निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं. इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौटे आने का भय बना रहता है. किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता. ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं. अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम. यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान. इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए. यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानी योगियों के लिए आगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है. एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित. इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में इसके इस श्लोक में पुष्टि की, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है. इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने में से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है. इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है. जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अवलिम मुक्त हो जाता है. फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है. दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है. इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचनों से होती है. श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है. इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं. इसका कोई विकल्प नहीं का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवद्गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता. ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं,
किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने के लिए यही उपाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधरिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today we will be discussing the birth and activities of the Supreme Lord Shri Krishna. तो आज हम चर्चा करेंगे जन्म और क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण की। Everyone takes birth, everyone has janma, right? हर कोई जन्म लेता है। Is there anyone here that has not experienced janma? क्या यहाँ पे कोई है जिसने जन्म की अनुभूति नहीं की? No, all of us experience janma and all of us perform activities. All of us also have karma. और हम सब ने जन्म की अनुभूति की है और हम सब ने कर्म भी किया है। This is something which is universal. This is universal. और यह संसारिक है। And even Krishna shows the pastime of taking birth and performing many amazing activities. और कृष्ण भी इस चीज को प्रस्तुत करते हैं, जन्म लेके अलग-अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। So what is the difference between our birth and Krishna's birth and our activities and Krishna's activities? तो क्या फर्क है हमारे जन्म में, कृष्ण के जन्म में, हमारी क्रियाओं में और कृष्ण की क्रियाओं में? The key word in today's shlok is divyam, divine. His birth and activities are divine. Our birth and activities are mundane. तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दिव्यम। जो भगवान की क्रियाएं हैं वो दिव्य हैं और हमारी क्रियाएं भौतिक हैं। So we're very interested in the birth and activities of many men in this material world. तो जिन लोगों को अलग-अलग प्रकार की भौतिक क्रियाओं में रुचि है, and there are many such men who have very amazing births and activities in this world which are glorified by so many people. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी क्रियाएं बहुत ही महान हैं, जो बहुत सारे लोगों की उनको प्रोत्साहित करते हैं। Here in India, you have a history of many great sadhus and philosophers and etc. तो हमारे भारत देश में भी इतिहास में बहुत सारे महान साधु और बड़े तार्किक रहे। And there are many books written about, biographies written about such great personalities, all about their birth and their life and their activities and their contributions to this world. और ऐसे लोगों के जीवनी भी लिखी गई, उनके जन्म के ऊपर, उनके क्रियाओं के ऊपर और उन्होंने जो समाज के लिए योगदान दिया है उसके ऊपर। And we have so many American celebrities which are also popular here in India, very famous for their activities in this, amazing activities in this world. और बहुत सारे अमेरिकी अभिनेता भी हैं जो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं उनकी क्रियाओं के कारण। But what is the result of hearing about and chanting about
the activities of these worldly people. लेकिन क्या लाभ है ऐसे भौतिकतावादी लोगों के क्रियाओं के बारे में जान के? We find that by giving interest into such worldly things, we are not alleviated of our material suffering. Rather, our bondage, our entanglement in this material world is only increased. हमारा ये अनुभव है कि ऐसे लोगों के बारे में जान के हमारी जो भौतिक समस्याएं हैं उनका कोई समाधान नहीं होता, परंतु हम इस भौतिक जगत की आसक्तियों में और ज़्यादा बंधे जाते हैं. But by hearing about the divine janma and karma of Bhagavan Sri Krishna and all of his various avatars, then the result is liberation from this material world. लेकिन भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म के बारे में जान के हम इस भौतिक जगत से तर जाते हैं. So why is this? तो ऐसा क्यों? The supreme absolute truth is absolute. This word absolute, very important. तो जो परम शाश्वत सत्य है वह शाश्वत. So for our birth and activities, our birth and activities are different from us. हमारे जन्म और क्रियाएं हमसे अलग हैं. Our name is different than us. हमारा जो नाम है वह हमसे अलग है. Our paraphernalia, like our clothing, like our body, is different from us. हमारी सारी जो वस्तुएं हैं वह जैसे कि हमारा शरीर, हमारे कपड़े, वह हमसे अलग हैं. And our abode, the house that we live in, is different from us. और हमारा धाम, घर जिसमें हम रहते हैं वह भी हमसे अलग है. This is because we are living in a relative world. All of these things which I've mentioned only have meaning whenever they are given relationship to us, which are the factual existing element. इस भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं उनका महत्व तब है जब वह हमसे संबंधित है. Without my name being ascribed to me, my name would have no meaning. मेरा नाम अगर मुझसे संबंधित नहीं है तो उस नाम का कोई अर्थ नहीं. Without my clothes belonging to me, the clothes would have no meaning. जो मेरे वस्त्र हैं वो अगर मेरे से संबंधित नहीं है तो उसका क्या अर्थ है? But Krishna is absolute. That means that all of his activities, paraphernalia, his names, his abode, all of those things are non-different from him. तो कृष्ण जो है वह शाश्वत है. तो जो कृष्ण के वस्त्र हैं, कृष्ण का धाम है, कृष्ण की सारी वस्तुएं जो हैं वह कृष्ण से अभिन्न है. This is because all of these qualities of Krishna are spiritual in nature, and the spiritual energy is absolute. It is always belonging to Krishna. क्योंकि जो कृष्ण का तत्व है वह आध्यात्मिक है और जो कृष्ण से संबंधित सारी चीजें हैं वह भी आध्यात्मिक है. However, our relationship with this material world is illusory because this material world is of matter and we are of spiritual energy. लेकिन जो हमारा संबंध है इस भौतिक जगत के साथ वह भ्रमित करने वाला है क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और यह जगत भौतिक है. Therefore, the name that we have in this life, the body that we have in this life, the home which we have in this life, the name which we have in this life, this is only this life. But so many other lifetimes have been there where we have all of these paraphernalia. तो हमारा जो नाम है, हमारा जो घर है और हमारी जो भी वस्तुएं हैं वह क्षणिक है क्योंकि वह इस शरीर से संबंधित है. लेकिन जो हमारे पहले के जन्म थे उनमें इन चीजों का कोई मूल नहीं था. But Krishna is eternally present in his spiritual abode. लेकिन कृष्ण अपने धाम में शाश्वत रूप से विराजमान है. Krishna never leaves Vrindavan. कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते. You might be wondering, yes, Krishna does leave Vrindavan. He went to Mathura, Dwaraka, Kurukshetra. He's in every single atom. How can you say he's not leaving Vrindavan? He's here. He's here, right in front of us, no? तो आप सब सोच रहे होंगे कि कृष्ण तो मथुरा गए, कृष्ण तो द्वारिका गए, कृष्ण तो कण कण में, कृष्ण यहाँ पर भी, तो कैसे उन्होंने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा?
What did it say? Goloka eva nivasatya khilatma bhuto govindam adi purusham tamaham bhajami. Even though Krishna is present everywhere, he's eternally residing in his dham, Golok dham, which he never leaves from. He is non-different from that dham. तो कृष्ण हालांकि हर जगह मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण कभी अपने धाम से नहीं जाते। Therefore, simply hearing the name of Krishna invokes Krishna personally. He is personally present in his name. तो सिर्फ कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण वहाँ मौजूद है। Hearing stories of the pastimes of Krishna, Krishna is personally present whenever such pastimes are heard. कृष्ण के बारे में हम जो लीलाएं सुनते हैं, तो जब हम उन्हें सुनते हैं, तो कृष्ण वहाँ पे भी मौजूद है। Seeing the form of Krishna, Archa Vigraha, this is Murti here. Seeing that form, this is non-different from Krishna. कृष्ण के विग्रहों को देखना, तो कृष्ण के अर्च विग्रह हैं, उनका दर्शन करेंगे, तो कृष्ण वहाँ पे भी उपस्थित है। And Krishna is Pavitram Paramam Bhavan. Pavitram Paramam, he is supremely pure. Therefore, when we remember Krishna, we also become purified. कृष्ण जो है वह पवित्रम परमम भगवान, कृष्ण जो है वह शाश्वत रूप से पवित्र है, तो जब हम कृष्ण से संबंधित होते हैं, तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। Just like when the sun is shining, there might be some unclean things on the ground, like urine. The sun is there and it purifies, it evaporates, it purifies the contaminated places, but that sun does not become contaminated. जिस तरीके से हम देखते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में जो भी दूषित चीजें हैं, अगर मूत्र वगैरह भी है, तो सूर्य उन चीजों को शुद्ध कर देता है, लेकिन उन चीजों को शुद्ध करते वक्त जो सूरज है वह अशुद्ध नहीं होता है। So similarly, Maya is compared to darkness, and Krishna is compared to light. So wherever Krishna is compared to the sun, so wherever there's the sun, there cannot be darkness. So wherever there is Krishna, there cannot be Maya. तो जो माया है वह अंधकार के समान है, और जो कृष्ण है वह सूर्य के समान है। तो जहाँ पे सूर्य है, वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता, जहाँ पर कृष्ण है, वहाँ पे माया नहीं हो सकती। So immediately, whenever we hear or chant about the name, form, qualities, pastimes of Krishna, immediately Maya is banished from our consciousness. तो जैसे ही हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में सुनते हैं, तो तुरंत ही जो माया है वह हमारी चेतना से दूर हो जाती है। Therefore, whenever we know in truth the transcendental nature of the pastimes and appearance of Sri Krishna, then we no longer have to take birth in this material world. तो इसलिए जब हम भगवान के शाश्वत जन्म और कर्म के बारे में जान जाते हैं, तो हमें इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। So we're hearing, just before this lecture, we sang Damodarashtakam, where we're hearing about one very sweet pastime of Krishna as a young boy in Vrindavan with his mother. तो अभी प्रवचन से पहले हम लोगों ने भगवान की एक लीला दामोदर अष्टकम का गुणगान किया, जहाँ कृष्ण एक बालक के रूप में लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। All of us here were also young boy at one time. हम सब जो यहाँ पर हैं, एक समय पे हम भी बालक हुआ करते थे। All of us also have a mother. हम सब की भी माँ है। All of us also, most likely, were probably very mischievous when we were little boys. और जब हम छोटे थे तो हम सब बहुत शरारती भी थे। But Krishna's pastimes, remember, Krishna's pastimes are divya. These are transcendental. लेकिन जो कृष्ण की लीलाएं हैं वह दिव्य है, वह शाश्वत है। We should not think that these are ordinary and that these are the same as the worldly activities of conditioned souls. तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि यह साधारण है, जैसा भौतिक जगत के लोगों की क्रियाएं होती हैं। So therefore, simply by hearing these wonderful pastimes of Krishna in Vrindavan, our consciousness becomes purified, and when we fully understand these, then we are eligible to go back to Godhead. इसलिए जब हम कृष्ण की क्रियाओं के बारे में, कृष्ण की दिव्य क्रियाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमारी चेतना उत्तम स्तर की हो जाती है, हम शुद्ध होते हैं और हम कृष्ण के धाम जाने के लिए योग्य बनते हैं। Srila Prabhupada explains that
to go back to the kingdom of God is something which is not at all easy. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के धाम जाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। And the impersonalists and yogis, they may attain liberation from this world after many births and deaths. तो जो मायावादी हैं, जो योगी हैं, वो लोग बहुत जीवनों के बाद मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। But even then, the liberation of such a person, merging into the impersonal effulgence of the Lord, is only partial, and they're always subject to falling back into this material world. लेकिन इतना मिलने के बाद भी जो ऐसे योगियों को मुक्ति मिलती है, जो भगवान के साथ भगवान की ज्योति में विलीन होने की मुक्ति होती है, उसके बाद भी उन्हें इस भौतिक जगत में वापस गिरना पड़ता है। But for a devotee who fully understands the pastimes and qualities of the Supreme Lord, he attains the spiritual world and there is no risk of him falling back down into this material world. लेकिन एक भक्त जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जो है उनको समझता है, तो वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर दोबारा लौटना नहीं होता। So therefore, we should take this as an opportunity to hear and chant about the divine qualities of the Supreme Lord. Upon doing so, we can become eligible to go back to Godhead. तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए कि भगवान की जो दिव्य जन्म और कर्म है उसे सुने और फिर हम भगवान के धाम जाएं। So specifically this month, which is known as Damodar month, we're remembering this special form of Krishna as a young boy being conquered by his devotee, by his mother. Simply remembering this and understanding this pastime of the Lord makes us eligible to go back to Godhead. तो ये महीना दामोदर महीना, इसमें हम भगवान की जो विशेष लीला है, जो हम देखते हैं भगवान अपने भक्त द्वारा बांटे गए उस लीला का स्मरण करते हैं, उसका स्मरण करने मात्र से हमें इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। Understanding Krishna doesn't mean that we memorize some shlokas, we memorize some songs about him, we know his names, and it doesn't mean simply memorizing. तो कृष्ण के को समझने का मतलब यह नहीं है कि कोई श्लोक याद करना या कोई गाना याद करना, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी चीज को याद करना। In order to fully understand the Supreme Lord as He is, it takes a mood of surrender. We must approach Him with surrender. कृष्ण को पूर्णतः समझने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। Whenever Yashoda Mata she finally caught Krishna. She was trying to tie him, but every single time the rope was just 2 fingers too short. जब भी यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ के बांधने का प्रयास करती, तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। Our acharyas have explained that these 2 fingers too short was fully depending on Krishna's mercy and not expecting anything in return from our service to Krishna. तो जो हमारे आचार्यगण हैं वह बताते हैं कि 2 उंगलियों का मतलब है, एक पूर्णतः कृष्ण की कृपा पे आश्रित होना और दूसरा कृष्ण से किसी भी चीज की अपेक्षा ना करना। Without having these 2 qualities, we will not be able to capture Krishna within our mind. ये 2 गुण अगर हमें नहीं है, तो हम कृष्ण को अपने मन में बांध नहीं सकते। For many births, we can study the Vedas, we can perform yoga, tapasya, many births we can go. Still we won't be able to even come close to Krishna. हम बहुत जन्मों तक वेदों का पठन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के पास नहीं। And by the path of bhakti, we can actually approach Krishna, but we cannot actually capture Krishna unless we are completely surrendered to Him. तो भक्ति पथ से भी हम कृष्ण को पकड़ सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण को बांध नहीं सकते जब तक हम कृष्ण के लिए पूर्णतः शरणागत नहीं। Completely surrendering to Krishna means that we are fully dependent on His mercy and we do not expect anything in return from Him. कृष्ण पर पूर्णतः शरणागत होने का मतलब है कि हम कृष्ण की कृपा पे ही पूरी तरह से निर्भर हैं और हम कृष्ण से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते। And such pure devotional service is what gives us the eligibility to eternally reside with Krishna in His spiritual abode. तो ऐसी अहेतु की भगवान की भक्ति ही हम लोगों को ऐसी योग्यता देती है जहाँ हम शाश्वत रूप से भगवान के साथ निवास कर सकते हैं। So this material world is full of suffering,
but the spiritual world is full of bliss. तो ये भौतिक जगत जो है यह समस्याओं से भरा हुआ है और जो आध्यात्मिक जगत है वह आनंद से भरा हुआ है. We are always searching for ananda in this material world, but we're always left unhappy. हम इस भौतिक जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं लेकिन हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं. But we can very easily experience true happiness by worshipping Krishna, who is Satchit Ananda. We're singing in this song. Namamishwaram Satchit Ananda Rupam. लेकिन मात्र कृष्ण के नाम का स्मरण करने से हम उस आनंद को महसूस कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस गीत में गाया, जो भगवान है वह सच्चित आनंद. So an intelligent person will take to this process of devotional service to Krishna. तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वह इस प्रक्रिया को लेंगे जो कृष्ण की भक्ति करने की प्रक्रिया है. And specifically during this month of Kartik, Damodar Mas, an intelligent person takes full advantage of this month, because this month especially we can make very, very rapid advancement in devotional service. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह इस मास में बहुत ही तीव्र रूप से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं इसका लाभ उठाके. We have some experience in the shops. Sometimes they have a sale where they have some buy one get one free. You have that here? हम सबका अनुभव है कि बहुत बार हम देखते हैं दुकानों पे सेल लगी रहती है जिसमें एक के साथ एक चीजें मुफ्त मिलती हैं. So intelligent person, he thinks, okay, now I will purchase. This is the time to purchase many things from that shop. Rest of the year, might not purchase so much from the shop. जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह उस समय जाके खरीदारी करता है क्योंकि उसको उसमें लाभ है. हालांकि बाकी साल में हो सकता है वो खरीदारी ना करे लेकिन उस समय वह करेगा. But Damodar Mas is so nice that this is buy one get 1,000 free. दामोदर मास इतना विशेष है कि आप एक चीज देते हैं और उसके साथ 1000 गुना आपको मिलता है. All of our activities performed in devotion to Krishna during Damodar Mas are multiplied by 1,000. सारी प्रक्रिया जो हम भक्ति के लिए दामोदर मास में करते हैं वह सब 1000 से गुना बढ़ जाती है. And if we simply practice very seriously Krishna consciousness during this month, then definitely we will attain the mercy of Krishna. तो अगर हम अच्छे से कृष्ण भक्ति का पालन करते हैं इस महीने में तो हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी. And same thing with the shops who have a discount sale. They have a discount sale to attract customers so that they will also purchase throughout the rest of the year, no? उसी तरीके से जो दुकानदार होते हैं वह लोग भी इस तरीके से सेल निकालते हैं ताकि लोग उनकी दुकान पर आएं और फिर साल भर उससे सामान लें. We buy one get one free, and we think, oh, these products are so nice. I will keep returning to the shop. हम जब कोई चीज लेते हैं जो एक के साथ एक मुफ्त होती है और हम देखते हैं कि वह चीज बहुत अच्छी है तो हम खुश होते हैं और कहते हैं ओह बहुत अच्छा सामान है, मैं इस दुकान पर वापस आऊंगा. So similarly, during this month of Damodar, we can develop a taste for devotional service, where we feel inspired throughout the rest of the year to perform regulated devotional service throughout the rest of the year. तो इस दामोदर मास में हम भगवान की भक्ति के प्रति जो हमारा रुझान है उसे विकसित कर सकते हैं ताकि साल भर हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएं. So we should take full advantage of this opportunity, chant as many rounds of Hare Krishna Mahamantra as possible, follow all of the principles very seriously, wake up early in the morning, come to the temple, perform Vaishnava Seva, etc. तो हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए, हमें ज़्यादा माला करनी चाहिए, हमें मंगल आरती में आना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की सेवा करनी चाहिए इस मास में. And in this way, we can catch Krishna. We can bind Krishna within our heart. और इस तरीके से हम कृष्ण को पकड़ सकते हैं और उन्हें अपने हृदय में बांध सकते हैं. And wherever there is Krishna, there cannot be Maya. So we will very naturally become free from all of the suffering of this material world. और जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ माया नहीं होती, तो हम बहुत ही आसानी से इस भौतिक जगत की समस्याओं से निकल सकते हैं. So we can finish there, and if anyone has any comments or questions, you can take. तो हम यहाँ पे अंत करेंगे. अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं, कुछ टिप्पणी है तो वह हाथ उठा सकते हैं.